be discussing Chennai versus Lucknow. Keshav, Chennai yet to win a match. They've lost two matches. Very opposite result कहूँगा मैं. First match 130 रन ही मार पाए, टॉप ऑर्डर कोलैप्स हुआ, धोनी ने 50 मारी. And this match, they scored runs, scored a 210 plus target. We know that was just about par in Brabant. There was so much due, and they end up on the losing side. क्या कहते हैं आप इसके बारे में? Yeah, disappointing result as a CSK fan. It's interesting that today two teams in yellow were failing to defend a big score. One in Lahore, almost Yes. 350 were chased down. Australia failed there, and here Chennai. I think Chennai is struggling with the bowling resources. As simple as that. क्योंकि जब auction में जो team form हुई थी तो मैंने उन्हें अपने top 4 में रखा था. But that was with a full-fledged team which had Deepak Chahar, which had Adam Milne / Jordan. So that really changes the outlook of their bowling attack. Right now, if you see Tushar Deshpande and फिर Mukesh Chaudhary, these guys are relatively very inexperienced. So to depend on them, even to defend a target like that, with due around. And then the nonsensical decision to give the penalty mitt over to Dube. I think all these factors combined today to uh, uh, that really kind of enabled LSG to chase it down. बिल्कुल, how badly CSK missing Deepak Chahar is clearly visible. And first match they played three न्यूजीलैंडर्स. कॉनवे थे, सैंटनर थे, मिलने थे. इस मैच में तीनों न्यूजीलैंडर बाहर हो गए. एंड CSK came up with a completely different overseas lineup. पहले आते हैं CSK की बैटिंग पे, देन वील कम टू शिवम दुबे. एक्चुअली बैटिंग में आज अच्छा कर दिए, 2 डाउन आए थे, अच्छे रन मार रहे थे. उथप्पा इन टॉप फॉर्म, गायकवाड गॉट अनलकी. तो बैटिंग पे क्या आपका ओपिनियन है ऑन CSK? I think batting was fine. I don't know why they dropped Conway after one game. It's not something that CSK is known to do. या They are known for giving one too many chances than one too less. So maybe there's a niggle or some other valid reason behind that. Because they played just three overseas players, so there was definitely a slot left, and even if they had to go without Conway at the top of the order, if there's no space, because the top four is Uthappa, Gaikwad, Raidu, and Moin Ali. So I don't understand why that slot was left empty. क्योंकि एडम मिल्क को आई थिंक इन्होंने बताया कि इंजरी थी, कुछ छोटी मोटी निकल थी, लेकिन क्रिस जॉर्डन भी है टीम में. आई डोंट नो व्हाई ही डिडंट प्ले. तीक्षाना है. तो बॉलिंग रिसोर्सेज थे. आई डोंट नो व्हाई दे बैंग्ड अपॉन द न्यूबीज ऑफ इंडियन डोमेस्टिक क्रिकेट. But otherwise, I think batting looks fine, and the biggest positive out of these two games is the way Dhoni is batting. I mean, last match maybe he was the savior. Today, and a very interesting stat. 15वां IPL हो रहा है, मतलब यस. 15 साल से IPL हो रहा है, और पहली बार हुआ है ऐसा हिस्ट्री में IPL की 222 मैच खेल चुके हैं MS धोनी. फर्स्ट टाइम हुआ है कि उन्होंने अपनी इनिंग की पहली बॉल पे छक्का मारा हो. बिल्कुल, पहली आई बार नो, हुआ ऐसा. वेरी सो दैट सरप्राइजिंग वाज स्टैट इंडीड. एंड मतलब कहते हैं कि सो धोनी वैसे या सिक्स हिटिंग है, बट ही क्रॉस 7,000 प्लस T20 रन्स. या एक और रिकॉर्ड, या ड्वेन ब्रावो द चैंपियन बिकम्स द हाईएस्ट विकेट या टेकर इन IPL हिस्ट्री. एंड केशव, आपके फैंस कह रहे हैं कि आप और भी स्मार्ट हो गए लस्सी पी के. सो नहीं, यस. मैं स्मार्ट नहीं हो गया. मैं थोड़ा वेट गेन करके आया हूँ अमृतसर से. तो ये मुझे अश्विनी नहीं, आई थिंक उन्होंने मुझे रेकमेंड भी की थी एक लस्सी जो स्पेशली मैं पीने गया था. बट थैंक यू अश्विनी फॉर द कमेंट. आई वुड लव बिल्कुल टू नहीं, सी कि स्मार्ट आप अश्विनी जी. बिल्कुल लग रहे हैं. आप CSK फैन जरूर हैं, पर आपके चेहरे की स्माइल अभी भी गई नहीं है. सो यार हाउ चेहरे की स्माइल पता है हैप्पी क्यों नहीं जा रही ब्रावो है? ब्रावो चेहरे पे की आता है. स्माइल इसलिए चेहरे की स्माइल इसलिए नहीं जा रही क्योंकि इट्स अ बिटर स्वीट मोमेंट कि धोनी अच्छी बैटिंग कर रहा है पर CSK हार रही है. तो धोनी की बैटिंग देख के थोड़ी सी स्माइल है मेरे चेहरे पे. बाकी ब्रावो, आई थिंक टू ब्रेक द record, and I was a little skeptical, to be honest, when they got him back at the auction table. I was not really that impressed with that buy, but
to see him still doing the job at 38, 39, and executing all those slow balls and Yorkers and mixing it up. I think uh, एक और सीजन आप कह सकते हो कि चेन्नई की बॉलिंग का जिम्मा उनके कंधों पे है, especially with Deepak Chahar missing. But I think after two losses, you might see a couple of changes in the next game, especially in the bowling attack. It has to be done because you don't have an out and out spinner, right? Jadeja and Moeen Ali both are all rounders. So both of them are not really known for their bowling in T20, right? I mean, at best, they are economical bowlers who would bowl wicket to wicket and, can give you three good overs. I can't really bank 4 overs every game from them. So you really needed somebody like, I think somebody like an Imran Tahir is being missed this season. They don't Shaana really है have उनके a पास, Shaana is a no, mystery but I spinner. think but he's also a finger spinner. Yes, he's a Yes. mystery spinner. He's a good T20 And as operator. coming to this name, which Ashwini has mentioned, he may not be a spinner, he is a fast bowler, but Rajwardhan Hangrekar is there. एंड ऐसा Yeah, नहीं है yeah, सीएसके, आपने कहा कि सीएसके इतनी चेंजेस करती नहीं है, अगर पर इस मैच में तीनों फॉरनर्स हटाए, बॉलर्स चेंज कर रहे हैं, विच इज़ वेरी अनयूजुअल, विच इज़ नॉट द टिपिकल yeah. सीएसके. सो डू यू एक्सपेक्ट I मोर uh, चेंजेस इन द नेक्स्ट मैच? See, Pretorius did well, so I think he'll retain his place. Bravo will retain his place. Moeen Ali will retain his place. The slot, the one slot that is left, I think they'll have to make a decision if Milne is Adam Milne is fit, that he might come back, or maybe Jordan. So that is one change. And let me just correct you, Ashwini, as well. It's not Hungrekar. I think it's Hungergaker, if I'm right. So I think he can be looked upon, but again, as we talked, Chennai is not a team to discard players on one game. So who knows? Maybe Mukesh Chaudhary and Deshpande might survive another game. Especially this season, it's a longer season than before with more teams. So I think they might they might give them another chance. And अभी तक क्या हुआ है कि both the games CSK has unfortunately batted first. So Yeah. who knows, the fortunes might change if they bat second. नहीं, बिल्कुल टॉस इज़ बिकमिंग वेरी वेरी क्रूशल, ये दिख ही रहा है कि विन द टॉस चूज टू बोल, इतनी ड्यू आ रही है तो दिक्कत हो जाती है. एंड आई थिंक तुषार पांडे शायद अपनी जगह रिटेन करेंगे, मुकेश चौधरी माइट बी द लकी वन, एंड वी मे सी द फोर्थ ओवरसीज स्लॉट बीइंग Yeah, फिल्ड इन. आई थिंक जॉर्डन शुड कम इन. मतलब जॉर्डन भी थोड़ा ऑफ कलर चल रहे हैं ऑफ लेट, बट स्टिल आई वुड से ही हैज but एक्सपीरियंस. जॉर्डन अगर आज होते तो आई एम डैम श्योर कि 19th ओवर उन्हें दिया जाता इंस्टेड ऑफ शिवम दुबे. आई डोंट डेफिनेटली. अंडरस्टैंड. आई मीन, आई I can't think of this as a Dhoni call. I can't think of that. आई I थिंक इट वाज अ maybe धोनी कॉल. धोनी ने ही ओवर शिवम दुबे को दिया, और इतना एक मेरे जैसे ही दुबे आया ना और दुबे 25 रन गए, बिल्कुल गहराइयाँ का डूबे गाना मेरे दिमाग में आ गया कि यार ये तो डूब ही नहीं, गए. मतलब आई कुड अंडरस्टैंड कि बाकी लोग के जो मेन आपके जो बोल रहे थे उनके ओवर खत्म हो गए थे. मोइन अली और जडेजा, with due around, you can expect them not to bowl in the death overs. But क्योंकि मुकेश चौधरी 3 ओवर डाल चुका था, तो आई थिंक इट वुड हैव मेड मोर सेंस टू गिव हिम द 19th ओवर, क्योंकि दुबे ने बिल्कुल ही बॉलिंग नहीं की हुई थी. एंड अगर उसको आप आखिरी ओवर में जैसे 34 आई थिंक चाहिए थे 2 ओवर में, तो यस. दुबे को अगर लास्ट ओवर में 14-15 भी मिलते ना, तो आई थिंक बैट्समैन पे भी उतना ही प्रेशर होता. अभी 19th ओवर में एविन लुइस और बडोनी पे इतना प्रेशर नहीं था, क्योंकि दे न्यू कि एक और ओवर है इसके बाद. So I think probably a wrong call, and still a little bit difficult to digest that it was Dhoni's call. I would like to think it was a Jadeja call, and Dhoni just wanted him to make a decision. Being the Well, captain, and whatever, it was a joint captaincy call taken by the management and it did not work. We saw yesterday also Rahane giving the 19th over to Venki Iyer. The end over, मतलब 19-20th ओवर, जिस प्लेयर ने पूरे मैच में बॉलिंग नहीं की, आप उसको मतलब yeah. एंड के एक दो ओवर दे दो डिफेंड करने के लिए. दैट डिड No, नॉट but वर्क आउट yesterday. there I think the reasoning was still different. I mean, Russell was not fully fit to नहीं, bowl मतलब 4 overs. वेंकी हैड नॉट बोल्ड, या तो फर्स्ट मैच में भी बॉलिंग नहीं की थी, कहीं मिडिल ओवर्स में भी. इट वाज हिज फर्स्ट ओवर, जो मेरा कहना है. एंड दोनों ऐसे प्रॉपर फिनिशर, ऐसे डेथ बॉलर्स है नहीं.
They both play as a sixth डेथ bowling. बॉलर, आई मीन डेथ बॉलर छोड़ा, वो प्रॉपर बॉलर भी, पार्ट टाइम मैं भी वही बोल रहा मुझे हूँ, दोनों शिवम सिक्स्थ दुबे में तो बॉलर है। कमी शिवम लगती है. दुबे तो शायद इस टीम में सेवेंथ एथ बॉलर की तरह आते या हैं. या या So या to make a player bowl his first over in the very last 2 overs, and जब एक अच्छा चेस चल रहा है, प्रेशर में है, टफ कॉल ही है, सी सिंह शायद वो जोगिंदर शर्मा बन सकते थे, नॉट टू बी. बट जोगिंदर को भी लास्ट ओवर दिया गया था. बिल्कुल. केशव, काफ़ी क्रिटिकल हो रहे हैं आप सीएसके की बॉलिंग पे. लेट्स नॉट फॉरगेट दैट Lucknow deserves equal credit of chasing a score of 210. It's never easy to go at a 10.5 plus run rate. How crucial was that opening stand? We know Rahul, Quinton, a very record world class opening pair it can become. Both are opening for the first time. पहले मैच में दोनों जल्दी आउट हो गए, but got a good 80-90 plus stand today. Yeah, and not to forget dropped catches also. I think both of them were dropped in between. एक Yeah. तो ब्रावो की बॉल पे आई थिंक मोइन अली ने कैच छोड़ा था, फिर एक तुषार देशपांडे ने कैच छोड़ा था. Yes. तो बट luck favors the brave, and they were. I always thought that this would go down to the wire, because given the quality of batting that LSG has, and the depletion in the resources of Chennai's bowling, I knew कि आज bowling में वो दमखम नहीं है. Maybe आप 4 ओवर ब्रावो के निकाल लो, बट बाकी एकदम ही नया था सारा bowling attack. आप प्रिटोरियस को देखो, डेब्यू कर रहे थे, चौधरी डेब्यू कर रहे थे, तुषार देशपांडे दूसरा ही गेम खेल रहे हैं चेन्नई के लिए. And because of Dew, the finger spinner role also get lesser and lesser. तो उस वजह से आई थिंक जडेजा और मोइन अली ने मिला के 3 ओवर डाले. तो आई थिंक आई वाज ऑलवेज ऑन द फेंस फॉर दिस चेज कि चेन्नई शायद ना डिफेंड कर पाए, एंड एंड में वही हुआ. ऑल्दो अब हाइंडसाइट इज अ ब्यूटीफुल थिंग, मतलब यू कैन स्टिल थिंक कि 2 ओवर 34 नीडेड could have gone any which way if they would have given somebody else that over. But hopefully they learn from the lessons. Definitely, and Evan Lewis finishing it off beautifully. बीच में मनीष पांडे, दीपक हुडा की विकेट्स लूज हुई. मिडिल ओवर में चेन्नई ने थोड़े कम रन्स दिए. लग रहा था चेन्नई इज एक्चुअली गेटिंग बैक. दे नीडेड 55 ऑफ द लास्ट 4 overs. वो 34 ऑफ द लास्ट 2 आया, तब लगा शायद चेन्नई इज ऑन द अपर साइड. And Yeah, Evan Lewis did not let that happen. He I is mean, not I, playing at I, his usual position. He opens for West yeah, Indies, opens for Rajasthan last year, and abhi matlab he's coming two down. And you saw him striking the ball, getting a 50 plus score, taking Rajasthan home. How good was his innings? yeah. I see. At 34 needed of 12, I didn't I was not as assured that Chennai still has upper end. I was 50-50 at that point of time as well, because there was a set batsman. Badoni ने पिछले इनिंग में बड़ी अच्छी इनिंग खेली थी, and then the batsman to come, Krunal Pandya was still in the dugout. So they had the resources to chase it down, and because Bravo's and Pretorius's overs were done by, so I was still 50-50 at the time. And I think Evan Lewis, यार उसकी तो हमने इंडिया के अगेंस्ट भी ऐसी ऐसी नॉक्स देखी हैं कि 2 सेंचुरी आई थिंक इंडिया के अगेंस्ट हैं. एंड इवन इन दैट 2016 सेमीफाइनल आई थिंक ही प्लेड a knock, if I remember. That was landed Uh, Simmons. Simmons or Russell से Simmons okay, आए थे yeah, जब yeah, he just landed. yeah. So I mean, playing in the middle order, not on your spot as well. I think these are the players you want in your team, because at times we have seen that players complain कि मुझे मेरा spot नहीं मिला, मेरे preferred spot पे खेलने को नहीं मिला, ball पुरानी थी, due था ये वो, players who make excuses. But this is a guy who always plays to his potential, never disappoints, and uh, given the kind of knock he played, I think LSG didn't really pay a lot for him, if I'm not wrong. I mean, No, no, they didn't. I this think they got him at the base price. yeah. So that's kind of a steal if he continues to win a couple of more games for them this season. Definitely, and even Ayush Badoni got at the base price of 20 lakhs. And how do you rate him? I know it's just two games. First game got his maiden Yeah, 50. This game, crucial last over, got a 6. उससे पहले भी थोड़े run मार रहे थे. He was waiting for his chance. Sent up above Krunal Pandya in this game as well. So LSG has certainly shown confidence in the man. आपको इनकी दोनों yeah. मैच परफॉर्मेंस कैसी लगी है? I think.
क्रेडिट टू द स्काउट टीम ऑफ एलएसजी जिन्होंने भी इसको ढूंढा और आई थिंक गंभीर हैज अ रियली गुड आई फॉर सच टैलेंट ही डेफिनेटली वुड हैव स्पॉटेड समथिंग स्पेशल इन दिस गाय इन द नेट्स तभी उसे फर्स्ट 11 में भी जगह मिली है वरना इट्स नॉट इजी टू ब्रेक इनटू एन आईपीएल टीम यू नो व्हेन यू आर young and inexperienced and not much of domestic also behind him. So that way, I think देखो talent और skill एक जगह, but the confidence that this guy has under pressure, you know, with all the nerves around. तो उस हिसाब से I think हर्षा भोगले ने भी tweet डाली है. So that is a huge deal for him. I mean, when Harsha Bhogle is tweeting about somebody, that means they are on the right track. So I would love to see him when we have a habit of किसी को भी हम बड़ी जल्दी आसमान पे चढ़ा देते हैं बिल्कुल केशव, सम वॉइस डिस्टर्बेंस एट योर एंड, बट अश्विनी कह रहे हैं कि लेट पिक हुए, देर आए दुरुस्त आए। बिल्कुल दैट्स ट्रू। एटलीस्ट ही इज गेटिंग ए स्पॉट। आई थिंक अनदर रीज़न इज़ कि 8 से 10 टीम हुई हैं, जो एक बहुत बड़ा एडवांटेज हुआ है बाकी प्लेयर्स के लिए। सो ऑटोमेटिकली यू गेट टू सी 14 मोर इंडियन प्लेयर्स प्लेइंग। कि अगर मैं दो टीम 7x2 करूँ तो 14 लोगों को और अपॉर्चुनिटी मिल रही है। आई थिंक दैट्स अ वेरी बिग प्लस पॉइंट। एंड होपफुली वी गेट ही गेट्स अ गुड रन एट एलएसजी। एक दो गेम्स के बाद उनको ड्रॉप ना किया जाए। ही सर्टनली शोन द टैलेंट। थैंक यू केशव। केशव थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड ज़रूर लग रहे हैं ऑन बीइंग अ सीएसके फैन। वो कह रहे हैं कि मतलब 210 भी काफ़ी नहीं था मेरे हिसाब से। तो नेक्स्ट गेम विद दिस सीएसके लाइनअप यू वुड बी एक्सपेक्टिंग अ स्कोर ऑफ मिनिमम 250 260। उसके बिना नहीं तो मतलब इतना भी नहीं अब मतलब आई थिंक आप कह रहे आज हो भी 210 भी कम है, तो फिर अब कितने रन मारे यार नहीं मतलब। बट 10-15 रन शॉर्ट थे आज भी आई थिंक जैसे उन्होंने स्टार्ट ली थी उस हिसाब से बट अगर आई थिंक बॉलिंग हमारी पूरी होती दीपक चहर होता है जॉर्डन होता साथ में मान लो जस्ट जस्ट रिप्लेस तुषार देशपांडे एंड मुकेश चौधरी with Deepak Chair and Milne/Jordan. I think they would have We definitely don't know why Chhota was defended it. not picked. क्या reason है? So Yeah. anyway, let's see what happens in the next game. Waiting for more clarification. कौन injured था, कौन नहीं था. On that note, thank you for tuning in. Thank you to all our subscribers. Thank you, Kesha, for watching. Do subscribe to Sports Taza for more such updates. Thank you.